हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शमेला और आप देख रहे हैं शमीज़ किचन। टुडे लेट्स मेक चिली चिकन इन ब्लैक पेपर सॉस। ये रेसिपी आप जैसे चिली चिकन बनाते हो सेम वैसी ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम ब्लैक पेपर सॉस बनाएंगे। ये फ्राइड राइस और नूडल्स के साथ एकदम परफेक्ट रहेगा। आई एम श्योर दैट योर फैमिली इज़ डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस चिली चिकन इन ब्लैक पेपर सॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In a bowl, add 250 grams boneless thin chicken slices. Goes in 1 egg white, half teaspoon salt, 1/4 teaspoon sugar, 1 tablespoon corn flour. Mix this nicely. And now deep fry these chicken slices till it becomes golden brown. Once done, remove these chicken pieces, drain it and set this aside. And next I'm adding 1 tablespoon corn flour in a bowl. Add some water. Mix this nicely and keep this aside. And next I'm adding 250 ml water in a bowl or jar. Add 1 tablespoon oyster sauce, 1 tablespoon soya sauce. Mix well and set this aside. In a pan, add 3 to 4 tablespoon oil. जिस ऑयल से आप चिकन फ्राई किए थे वही ऑयल आप यूज़ कर सकते हो. And next I'm adding 2 tablespoon minced garlic. Goes in 1 large onion cubed, 2 green chillies, 2 dry red chillies. Fry this for a second. And next I'm adding 1 cubed capsicum and bell peppers. Mix well and cook this for half a minute. I'm sorry I missed one video clip while I was adding 1 teaspoon chicken powder और साथ में I was adding fried chicken pieces. अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हो. And to this I'm adding 1 teaspoon black pepper powder. Give this a very nice mix. At this point, I'm going to add the sauce mix. Add some salt if required. And now adding corn flour mix. Mix this nicely and cook for half a minute. अब इस पॉइंट पे आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप स्विच ऑफ कर सकते हो. अगर आपको एकदम ड्राई चाहिए तो आप 1 मिनट तक अच्छे से पका के इसको स्विच ऑफ कर लें. This chili chicken pepper sauce tastes similar to what's served in many Chinese restaurants. An easy chicken recipe that can be made quickly. Juicy chicken pieces stir-fried with healthy colorful veggies and then tossed with delicious homemade stir-fried sauce. You can serve this chicken with either steamed rice, fried rice or noodles. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक एंड शेयर दोनों करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. बेल आइकॉन दबाने से मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी. फिर मिलेंगे और भी बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ. टिल देन, स्टे हेल्दी, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे.